हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अभी सेमेस्टर 2 स्टार्ट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड आई बिलीव अब आप डिसर्टेशन के बारे में, अपने थीसिस के टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं अपने फ्रेंड के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ and meet Dev. He's working for an organization called Effective Thesis, which is a non-profit organization. And ये organization students को free में guidance provide करती है कि कैसे आप अपने thesis और dissertation के लिए ideas develop कर सकते हो. It's a free of cost service and I think this is the perfect timing to record this video because अभी ये सर्विस सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अंडरग्रैड में हो, मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, किसी भी तरह का आपको थीसिस लिखना हो, इफेक्टिव थीसिस आपको आइडिया जनरेशन में एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा जिसके बारे में दे विल बी टॉकिंग अबाउट। इवन आई एम गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम इफेक्टिव थीसिस, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, please subscribe to my channel if you haven't because I'm uploading a lot of informative videos for students who are in the UK and who are about to come here. And I'm also available on Instagram and LinkedIn. You can follow me there. You can also become a member of the channel for members only live streams and Discord group. और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं देव से कैसे मिला। सो इसी रूम में, इसी जगह पे एक मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी एंड वहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो मैं ऐसे ही सब नए लोगों से मिल रहा था। देन आई मेट देव, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हमारे बैकग्राउंड के बारे में एंड देन हमारी फिर इस चीज़ पे बात हुई कि मेरा यूट्यूब चैनल है, स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे करके फिर देव ने बताया कि ही इज़ वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव थीसिस एंड फिर उसने बताया कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री में स्टूडेंट्स की हेल्प करती है आइडिया जनरेशन में ऑन फॉर थीसिस राइटिंग एंड डिसर्टेशन राइटिंग। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मैं बोल चुका हूँ, अब आई लेट देव explain the benefits and the services provided by the organization. And before that, just quickly give a quick intro of what you are doing right now. क्या प्रोग्राम है, कौन सी यूनिवर्सिटी, everything. तो हाय गाइस, आई एम देव। मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में। मेरी पीएचडी साइंस और सोसाइटी में फोकस है, वन हेल्थ मॉडल्स ऑफ डिजीज़। मैं एक वेलकम ट्रस्ट फंडेड स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मेरी रिसर्च अब शुरू हुई है। आई एम गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन एनहांसमेंट टेक्नोलॉजीज एंड हाउ दे अफेक्ट सोसाइटीज़ इन द ग्लोबल साउथ। सो कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जहाँ भी where we all come from really. I'm originally from Thailand but I have family from India, तो मेरी हिंदी थोड़ी fractured है. It's fine. So sorry in advance. तो मैं पार्ट टाइम यहाँ पे इफेक्टिव थीसिस में हेड कोच हूँ। इफेक्टिव थीसिस ये ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को की हेल्प करती है रिसर्च आइडियाज़ को डेवलप करने में और रिसर्च रिसोर्सेज भेजने में। तो हम ये कैसे करते हैं? पहले हम फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कोचिंग कैसे होती है? स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कोचिंग के लिए और हम आके स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, लर्न करते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या इंटरेस्ट है, हम उनके इंटरेस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं तो जो इम्पैक्टफुल रिसर्च बन सके। तो हम ये इम्पैक्टफुल रिसर्च कैसे करते हैं? हम इम्पैक्टफुल रिसर्च encourage करते हैं by connecting students with experts in the area. हमारे पास over 125 experts लिस्ट में है। ये experts सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से आते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया से, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, सब यूनिवर्सिटी से एक एक करके आते हैं। तो हमारे पास ये एक्सपर्ट्स ओवर 3 years ये लिस्ट डेवलप कर बैठे हैं। और एक्सपर्ट्स के अलावा हमने और भी सर्विसेज डेवलप किए हैं। तो एक चीज़ है, जो आप अंडरग्रेड हो, मास्टर्स हो या पीएचडी स्टूडेंट हो, आपको कम्युनिटी स्टूडेंट्स फाइंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है जो सिमिलर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि योर रिसर्च हैज़ टू बी यूनिक विद इन योर क्लास, विद इन योर रिसर्च, बट देयर अदर पीपल हु माइट ऑल्सो डू रिसर्च सिमिलर टू यू एंड यू माइट वांट टू फाइंड जो भी एक सिमिलर रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म डेवलप
कर रहे हैं जिनमें आप और कनेक्शंस और करियर कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं और लोग से मिल सकते हैं और इनके इसके ऊपर हम और भी हमारे पास और भी सर्विसेज है जैसे जब आपको मास्टर्स या पीएचडी सुपरविजन की ज़रूरत है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारे पास एक सुपरवाइज़र डेटाबेस है जिनमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप सुपरवाइज़र डेटाबेस को एक्सप्लोर करके फाइंड रेलेवेंट सुपरवाइजर्स टू आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ जैसे हो सकता है तो there's also other services that we have such as अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने हैं जैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ या इंटर्नशिप्स और आपको पता नहीं वर्ल्ड में कहाँ से ये रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं इन इंटरेस्टिंग एरियाज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस or animal welfare where you're trying to help improve animal welfare. Especially we have a few organizations that are doing work in India itself as well and abroad. And ये research opportunities कैसे find कर सकते हैं हमारे पास एक बाई वीकली न्यूज़ लेटर है जो आप साइन अप कर सकते हैं इसको अर्ली करियर रिसर्च अपॉर्चुनिटी नेटवर्क कहलाते हैं तो एक्रॉन इन शॉर्ट फॉर्म्स बहुत पसंद है हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको पता नहीं तो ये एक्रॉन ना आप साइन अप करके फिर आपको ये सर्विस मिलती है तो और इसके बाद अगर आपको फंडिंग चाहिए तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए फंडिंग ढूंढ रहे हो तो समटाइम्स डिफ़िकल्टी होती है कि फंडिंग कैसे मिल सकती है कैसे कहाँ से आ सकती है तो इसके लिए भी हमारे वेबसाइट पे एक फंडिंग डेटाबेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कहाँ से फंडिंग अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आप कोई प्रपोजल राइट कर रहे हो फंडिंग के लिए तो आप कोचिंग भी कर सकते हो और हमारे साथ कोई पूछ सकते हो कोई एडवाइस कोई रिसर्च तो हम कोचेस जैसे मैं और मेरे टीम ऑफ वॉलंटियर कोचेस वो आके कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं राइटिंग और रिसर्च एरिया में और कैसे प्रपोजल को प्रिपेयर कर सकते हैं तो समटाइम्स हम एडवाइस देते हैं समटाइम्स हम एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो वो एक्सपर्ट्स भी आपके साथ वीडियो कॉल या ईमेल से सुपरविजन या मेंटोरशिप देंगे तो ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है जैसे आप यूजुअली आपको एक एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर टॉप यूनिवर्सिटी से आसान से कॉल टाइम नहीं मिल सकता लेकिन हमने पहले से ही प्रीवियस अरेंजमेंट कर बैठे थे कि वो आपको थोड़ा टाइम देंगे अगर आप इफेक्टिव थीसिस से हो तो हाँ तो दैट्स अमेजिंग थैंक यू इनके अलावा वी ऑल्सो हैव सम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जो हम उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं जैसे एक AI रिसर्च असिस्टेंट elicit.org तो उनके साथ हमारे पास एग्रीमेंट है कि अगर वो इफेक्टिव थीसिस स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस देंगे तो आपके पास रिसर्च असिस्टेंट्स फ्रॉम एन AI टेक्नोलॉजी भी आ सकता है ईजिली थ्रू कोचिंग विद अस तो इन सब के लिए आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म से फिर कोचेस या हेड कोच जैसे मैं या एक और हेड कोच आके रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को और हम आपको फिर उसके बाद हम कॉल करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे वो कॉल को हाँ तो दिस इज़ अ समरी ऑफ व्हाट वी डू ऑल राइट एंड जो एक्सपर्ट्स हैं जो एडवाइजर्स हैं जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे तो वो भी सब एटलीस्ट पीएचडी तो होंगे ही शायद सब या फिर उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं हाँ सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऋतिक सो हमारे एक्सपर्ट डेटाबेस में इधर लेट करियर पीएचडी रिसर्चर्स या एक्सपर्ट्स हु हैव ऑलरेडी एक्सपर्ट प्रोफेसर्स होते हैं तो बैलेंस होता है क्योंकि अंडरग्रेड्स को समटाइम्स व्हेन यू आर अंडरग्रेड यू वांट एन एक्सपर्ट हु कैन गिव यू मोर टाइम जैसे ज़्यादा टाइम देंगे थोड़ा बात करने में तो वो ज़्यादा टाइम के लिए हम रेकमेंड करते हैं जो अर्ली करियर पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं रादर देन professors who cannot give as much time to the students. If it's a PhD student who applies to coaching with us, then we will try to connect them with an expert who's a professor already. So we have a balanced mix of experts who are PhD students all the way to professors in a particular university. ओके सो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी पीएचडी के ऊपर ही ऑल्दो आई हैव नो आइडिया अबाउट पीएचडी दैट इज़ व्हाई आई इनवाइटेड वन ऑफ माय फ्रेंड्स रमन ही इज़ डूइंग पीएचडी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोमेडिकल समथिंग रिलेटेड टू दैट एंड ही
like explained everything very beautifully. It was like 51 minutes long video. 51. If I'm not wrong, या 51-55 minutes long. बट उसके बाद लोगों के इतने सारे मेरे पास क्वेरीज आई कि फंडिंग कैसे ढूंढते हैं, प्रपोजल कैसे राइट करते हैं. तो ये वीडियो उसके बाद मतलब एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं है, बट I was very lucky. I was at the right place at the right time. I met Dev and he is working for this organization. And जो PhD students हैं, even masters and undergrad, जिनको आगे अपने करियर के लिए, एकेडमिक करियर के लिए गाइडेंस चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, इवन फॉर फंडिंग्स, इवन टू गेट इन टच विद यू नो एक्सपर्ट्स जो कि अर्ली करियर PhDs हैं, या फिर प्रोफेसर्स. आई डेंट नो कि प्रोफेसर्स भी जो हैं वो गाइडेंस देते होंगे. तो यहाँ पे अगर आपको एक प्रोफेसर से गाइडेंस मिल रही है, इट्स अ बिग डील. डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है? एग्जैक्टली. बिकॉज प्रोफेसर बनना ही, अगर आप PhD कर रहे हो तो आपको पता है कि what it takes to become a professor here. So it's amazing. So in a nutshell, if you have to quickly summarize all the USPs, what are the 3, 4, 5, 6 USPs that your organization offers? ठीक है. तो one-on-one mentorship coaching, expert connections, building a community of other connections with other students who are working similarly, who can help review your thesis or proposals. Right. Or funding database, opportunity information, Ekron. और एक मैं भूल गया बताने के लिए, हमारे पास भी थीसिस प्राइस भी है जो $1,000 मिल सकते हैं अगर आप ये प्राइस को अप्लाई करना चाहते हैं. तो अगर आप फ्रॉम नाउ टिल सितंबर में एक थीसिस राइट करते हैं विद नो पर्टिकुलर लिमिट, तो ये थीसिस राइट करने में आपको आप सबमिट कर सकते हैं हमारे साथ, और ये सबमिशन से हम आपको almost $1,000 prize मिल सकता है if you win the prize, and if you write a good one you might also get honorary $100 prize. So it's not a large amount, but we hope it motivates people to like write and apply for coaching, and we help them through our coaching, and then they can still apply for the prize. So there's no like अगर आप prize को apply कर सकते हैं doesn't mean you cannot apply for coaching. आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं. there's no service, so we can provide services for everything free of charge. So our biggest USP I think is that we are fully funded organization, so we don't need to ask anyone else for funding, and we can provide these services free. Right. हाँ. Okay. And ठीक है, ये तो हो गई मेन USPs. बट कई लोग कमेंट में पूछेंगे कि कैन यू राइट essays for us, कैन यू राइट thesis for us, do you charge for that? सो वो भी क्लियर कर दो एक बार. हाँ जी. तो हम राइटिंग में हम आपको मदद नहीं कर सकते. सो वी डोंट हेल्प यू राइट एनीथिंग, वी डोंट राइट फॉर यू. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू विद रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प यू improve your writing and improve your research and improve your career. But we don't take money, and we try to remain as ethical as possible. तो यहाँ पे हम कोई हेल्प नहीं कर सकते स्पेसिफिक राइटिंग में. ठीक है. एंड जो इफेक्टिव थीसिस है, जो देव का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिससे आप उनके टच में आ सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन की बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा, सो दैट जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करो आपको सारी डिटेल्स मिल जाए कि आपको देव के साथ कांटेक्ट कैसे करना है. ये तो खैर हो गई USPs. एंड यू वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सो कैन यू प्लीज एलाबोरेट ऑन दैट? हाँ जी. सो जैसे मैंने पहले बोला था, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑलमोस्ट 3 years old हो गया. सो वी बिन अराउंड फॉर अ वाइल. उस टाइम में हमारे पास ओवर 600 एप्लीकेशंस आ बैठे हैं, और इन 600 से हमारी कम्युनिटी अबाउट 400 students we have in our community who are active and like participate and make connections, and usse we've also built our expert list to over 125, और ये roads growing expert list है. As we grow the expert list also grows. और इसके अलावा हमारे हमने बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को हेल्प को 600 एप्लीकेशन से हमने एटलीस्ट ओवर 60% को हेल्प किए हैं, और ओवर 60% ऑफ दी स्टूडेंट्स वीव हेल्प्ड एंड ट्राई टू हेल्प, एंड वी ट्राई टू
help all the students who apply to our coaching. Huh. All right. Yeah. And how many experts do you have like in touch with your organization who can help students? Over 125. Over 125 from various areas, from different All over the world. हाँ हाँ जी तो quite a lot in the UK, specifically Oxford, Edinburgh, St Andrews University in Scotland, a few others off the top of my head I can remember. और फिर America से भी quite a few experts, and then some in Australia, and some around Europe as well. So we're not located in one particular location, but quite a lot here. Right. It's an internationally diverse. हाँ जी बहुत diverse. Our working team जो work करते effective thesis में, the organization project manager is based in Czech Republic, and I was working here since I was in Thailand. Then we had someone who was from Kenya, and then that person has left. But then we had a couple of people who live in Germany and Greece, and our volunteers come from Portugal and Netherlands. तो शो डाउन ठीक है बट इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल कि experts तो चलो हैं but they are from the top institutions, like nothing is above Oxford in the UK, and if you can get any guidance from anyone who's from an institution such as Oxford or Edinburgh or any other top institution, I mean, this is amazing, right? And you should definitely take advantage of this opportunity. That's great. But tell me about, like, how did this organization come into existence, and what was the idea behind starting this organization, since you have been a part of this organization काफी time से. So you'll be in a position to explain क्योंकि सब लोग पूछेंगे कि hopefully कि ये जो organization है, पहली बात तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रही है, what's the objective, and जो लोग काम कर रहे हैं since it's a non-profit, what are they gaining in return, and अगर किसी तरह की funding आती है तो वो कहाँ से आती है. हाँ जी तो हमारे फाउंडर जो चेक रिपब्लिक से है वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही गुड पर्सन है, जहाँ पे उनकी एम दे रिकग्नाइज्ड अ गैप इन रिसर्च. सो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ वर्ल्ड की क्या प्रॉब्लम है जो उनने रिसर्च के गैप से आइडेंटिफाई किया. तो रिसर्च हर तरह का रिसर्च होता है, हर तरह की रिसर्च इम्पैक्टफुल हो सकती है और यूज़फुल हो सकती है, लेकिन सम रिसर्च टॉपिक्स थोड़े निगलेक्टेड होते हैं जिसमें रिसर्च नॉट एज मच एज नीडेड इज हैपनिंग. तो there's more research needed in that area so that more impact can happen, because that problem is a more pressing problem than like other problems. Example मैं देता हूँ तो climate change is a pressing problem that we are facing in humanity. तो ऐसे जैसे problem होते हैं, do we need more research in there? Yes, we need a bit more research than it is currently going on. तो मैंने एक scenario दिया है climate change का, लेकिन climate change के टॉपिक में स्पेसिफिक सिनेरियोज भी होते हैं जिनको निगलेक्टेड होते हैं, जिनमें आपने एक्सप्लोर नहीं किया होगा या रिसर्च ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा. तो ऐसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को अवेलेबल बनाना और ऐसे रिसर्च डायरेक्शंस को हमने we want to send more people towards ऐसे रिसर्च गैप को फिल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था. तो the aim was to send students towards these topics that is not covered in the world as much as it should be, and so we try to fill that gap by sending students there, and trying to provide these students with the best support to achieve that research in a helpful manner, in a good manner. So they started with he started alone, so he started helping and building the experts alone, and like building this database so that he could send students towards particular experts and help them in
whichever way they could. And as the organization grew with more volunteers, we also started to receive funding from this fund called the EA Infrastructure Fund. So what is the EA Infrastructure Fund? अगर आपके यूट्यूबर्स को क्वेश्चंस होंगे तो EA एक मूवमेंट है ना जिन वो मूवमेंट tries to focus charity impact on charities that have the highest impact. So जैसे we have a high impact because we send our students towards research topics to create a research impact in the future. That's quite a big impact in the world. So our theory of change is to create this impact by sending students towards this research and hopefully making them effective and top level researchers so that they can create top level research. क्योंकि research quality भी अच्छा होना चाहिए. Right, absolutely. Yeah. So we try to make sure that research quality भी अच्छा होए. So we are not trying to just send anyone, but we want to make sure that whoever we do send also has the best resources and best support and also is able to conduct top quality research. So Right. with this like aim, it was easy to get experts to sign on because then they also understand. तो professors को भी एक problem होता है. Sometimes they are looking for students who they need to trust and they don't get to talk to them as much. So Oh yeah, I didn't think of like वैसे उल्टा नहीं सोचा उल्टा, मैंने हाँ. कि students look for opportunities, they want to get in touch with professors, but professors also look for exactly. candidates with good potential who want to do some research in a field in which professor might have some interest. Exactly. Right? हाँ. So अच्छा, okay. So ये mismatch होता है जो हम help कर सकते हैं Okay. क्योंकि professors will also want students who they can talk to, Right. who they know have already had coaching in an organization, is prepared, is like जो ready होते हैं research के लिए. तो ऐसे connection के साथ वो helpful हो सकता है. And we also help them. We also help our students like by guiding them in how to choose a professor. क्योंकि students को भी अच्छा professor select करना चाहिए. Your research, suppose PhD कर रहे हो तो 4 साल या 3 साल मिनिमम आप रिसर्च कर रहे हो यूके में PhD रिसर्च के लिए. वो 3 साल में आपको सुपरवाइजर चाहिए जो अच्छा होए, जो आपको अच्छा ट्रीट करे, जो आपको अच्छा सपोर्ट दे. और ऐसे आपकी राइट्स होते हैं स्टूडेंट बनने में. आप ऑलमोस्ट 3 years ऑफ योर लाइफ दे रहे हैं ये रिसर्च के लिए. Absolutely. हाँ, तो आपको परफेक्ट सिचुएशन फाइंड करना चाहिए. तो ऐसे गाइड भी हम प्रोवाइड करते हैं कि व्हाट शुड यू लुक फॉर. हमने एक पोस्ट और राइटिंग हमने रिसर्च करके ये गाइड बनाया है जो हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं. Okay. तो एक और चीज़ है प्रोफेसर्स लाइक इन एडिशन टू द प्रोफेसर्स लुकिंग फॉर पीपल, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव द सेम डिफिकल्टी. दे आर आल्सो लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स who they can mentor, who they can teach, or who they can train to work as researchers in their organization. And so ऐसे gaps के लिए भी effective thesis coaching के साथ हमको we can help connect students with this kind of organizations in the future. Okay. तो ये future में और grow होएगा. So this is a future goal of ours and शुरू हो गया है. So we're starting to do that more. But Yeah. as students apply more, as we have more people applying, we'll have a larger pool of students, a bigger talent, more Yeah. talent. So ये talent we can connect with people who are looking for talent. And so Right. So tell me something. जो experts हैं panel पे you mentioned over 125 experts. हाँ. So these experts will get in touch with students. For example, they get a chance to interact with the student. Is that possible? So through the coaching, we will see whether the student is ready to talk to an expert. And the expert is going to be like only professor, or like you mentioned professor or PhD student or early career researcher. So maybe not a professor yet, but someone who's already completed their PhD and is researching in an institution. So बहुत ही wide range of experts है because we try to find the best match for the student. तो जैसे आप if you are a PhD student, then you probably want an expert who can talk to you
towards a higher level of research than an undergrad or a master's student. So if you're a PhD student, we'll try to connect you with someone who is Yep. more of an expert than you are. But then if you're an undergrad student or master's student, so maybe you don't. So this is where the coaching comes in, where we learn to see what do they need exactly. In Okay. students ko kya chahiye, like what is their exact need. So my question is, for example, there is a student who is about to finish his or her master's, and that student wants to pursue PhD afterwards, हाँ जी. and they get in touch with your organization, and you put that student in touch with an expert. हाँ जी. For example, that expert is a professor. So in future जो student है, क्या वो उस professor के साथ बात करके फ्यूचर में जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वहीं पे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर दैट एक्सपर्ट? हाँ जी, तो कर सकते हैं इन थियोरी इन द फ्यूचर, लेकिन ये हम गारंटी नहीं करते. ऑफ कोर्स. हाँ, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, दे साइंड अप टू हेल्प द स्टूडेंट, बट ऑफ कोर्स जैसे एनी सिचुएशन में वी वांट टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स की फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छी होए, Right. कि वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी होए, जो एक्सपर्ट भी उनको पसंद करते हैं, तो वो चांसेस ऑफ डूइंग रिसर्च विद दैट professor in the future go higher, so they have that connection with them from before, so it Yeah. helps. तो एक और चीज़ है कि जो हमारी सुपरवाइजर डेटाबेस है ना, वो सुपरवाइजर डेटाबेस में सब सुपरवाइजर्स आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स टू connect with, to mentor for PhD students. So we built that supervisor database separate to the expert database, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम आपने मेंशन किया, वो सुपरवाइजर डेटाबेस में जब आपको कनेक्शन बिल्ड करना है तो आप हमारे साथ कोचिंग कर सकते हैं और हम गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे किसके बारे बात कर सकते हो, और हाउ टू डू दिस रिसर्च, जैसे टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट कनेक्शन एज वेल. बट जैसे आपने बोला, इफ इट्स एन एक्सपर्ट देन यू कैन, if you build a good relationship over time and they are suddenly looking for a PhD student, you will definitely be part of the mix. You will definitely have a better chance than... Yeah, plus it's a good networking opportunity as well. Exactly. Like you talked about building a community of students who are doing similar research, and even to get the opportunity to interact with early career PhD students and Exactly. researchers and Yeah. experts. So amazing opportunity to build academic network, I would say. Yeah. And if you guys are planning to pursue PhD in the near future or in the long run, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के टच में रहें. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ट्राई टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज देखो होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों से ना नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, करियर पाथ निकल जाते हैं. मैं एक पार्टी में आया था तो आई मेट देव, एंड नाउ आई एम मेकिंग वीडियो, the video that you are watching because we met At a party. yeah, can you imagine? For like 5 minutes. 5 minutes. तो opportunities कहाँ से निकल जाए किसी को नहीं पता होता है, and it's an opportunity where you're getting a chance to interact with people who are doing actual research, who have been interacting with students for such a long time. So great stuff, I would say. And now maybe you can specifically talk about specific offerings for specific segment of students. For example, undergrad students भी reach out कर सकते हैं, master students भी, PhD students भी. तो इन students के लिए अलग अलग क्या क्या offerings हैं. I think overall objective of the organization you have explained very well. Maybe quickly you can go through each and every point for specific segment of students. Okay, perfect. तो मैं शुरू करता हूँ undergrad से, because of course you are starting your career. So some undergrads में thesis requirement हो सकते हैं या research requirement हो सकते हैं, या if you're studying, I'm not sure in India if this is the case, but if you're doing in the UK they'll call it an honors. So if you're doing a thesis component, it's called an honors. So if you're doing the honors part of your degree, तो इसमें research होता है. तो sometimes, especially in your undergrad years, you are not sure how to start the research. कौन सी topic choose करे? How will this topic actually help my research career in the future? Right.
should I do this to explore or build skills, ऐसे questions आ जाते हैं students में, और ऐसे questions के लिए answer you need to talk to someone who has experience with this already. तो जैसे आप सोच सकते हैं, you can do it yourself as well, but it's better for you to have some career guidance in advance on these kind of questions. तो ये career guidance हम provide कर सकते हैं coaching के साथ. So ये coaching में हम ऐसे questions को address करते हैं और ऐसे questions को आपके साथ answer find कर सकते हैं. उसके बाद once you've answered those questions, so what topic should you choose? How can you find the right stuff or the right resources to start reading, to start learning about this topic? ये एक और चीज़ होती है, जैसे आप फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हैं अंडरग्रेड में, तो आपको पता नहीं होता गूगल सर्च के अलावा और क्या कर सकते हैं. मे बी यू हैव एक्सपीरियंस यूजिंग द डेटा बेसिस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बट समटाइम्स व्हेन यू एक्सप्लोरिंग अ होल न्यू एरिया, देन आपको थोड़े बेसिक रिसोर्सेज will be really helpful to start that research. जैसे आपको पता होगा, when you did your research probably you started one and then you follow. तो ये important ones हम collect करते हैं और भेजते हैं students को. भेजते हैं. So we'll email it to them. We'll get. It sounded like बेचते हैं. So just wanted to clear it out. भेजते हैं, not बेचते हैं. Sell नहीं करते हैं, send करते हैं. Oh, not बेचते, भेजते. अचानक से non-profit organization. नहीं. Profit organization. Email. Free mail. Okay. ठीक है. हाँ, तो हम ईमेल करते हैं ये रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जब आप अंडरग्रेड होते हैं तो आपको थोड़ी रिसर्च एडवाइस अदर देन कोचिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस इन योर रिसर्च इटसेल्फ शायद हो सकता है. तो उनके लिए आपको एकेडमिक नेटवर्क की ज़रूरत होती है, और इन योर अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी योर एकेडमिक नेटवर्क इज़ गोइंग टू बी अदर अंडरग्रेड्स. तो आपको ये एकेडमिक नेटवर्क नहीं मिल सकती जिसकी आपको ज़रूरत होती है. तो इसलिए हम हमारी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कंटेंट बिल्ड करते हैं, और वो कंटेंट से कनेक्शंस भी बिल्ड करते हैं अदर स्टूडेंट्स हु आर मे बी एट अ later point in life than you are and more academic research experience than you have. तो ऐसी गाइड और मेंटोरशिप आपको डिफ़िकल्टी से मिलती है और हम ये आसान कर सकते हैं. तो दिस इज़ undergrads, typical undergrad issues that you might face. But now you're finishing your undergrad, assume करो, तो आपको मास्टर्स करनी है. तो मास्टर्स की दो टाइप्स की मास्टर्स होती है ना, रिसर्च और टॉट मास्टर्स. तो टॉट मास्टर्स में ऑल्सो एक रिसर्च कंपोनेंट यूजुअली होती है, जो शायद स्मॉलर थीसिस होती है लेंथ में. एंड में डिसर्टेशन. I also have that. एग्जैक्टली होती है. सो इन बोथ टाइम्स यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फॉर्म. उसके लिए भी इफ यू हैव नॉट डन एन अंडरग्रेड रिसर्च बिफोर, देन द प्रीवियस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू विल अप्लाई अगेन इफ यू नॉट डन रिसर्च बिफोर. Right. For example, Indian students who have, who have started their studies here in the UK, after doing their undergrad in India, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कैसे करनी है रिसर्च. जेन्युइन इशू है ये. मेरे को इतने सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट करा कि असाइनमेंट कैसे लिखते हैं. सो अगर असाइनमेंट लिखना नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था, मैंने सीखा एंड फिर वीडियो बनाई. तो डिसर्टेशन तो एक दूसरी बात है. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, राइट. हाँ, लेवल ही वन अप हो जाती है, एंड उसकी इतनी ज़्यादा वेटेज भी होती है, सो यू कांट टेक इट वेरी लाइटली. एग्जैक्टली. उसमें यू हैव टू परफॉर्म वेल, इट्स गोना अपलिफ्ट योर एंटायर ग्रेड. So in terms of that, it's very crucial, and especially for people who don't know how to do it. Exactly. हाँ, तो especially in addition to just grade weightage, ये research opportunity is also skill learning opportunity. जैसे you are going to have to, after you complete this research, whatever topic you choose, it will affect your career or your research path in the future in some way. So either you build certain skills. For example, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और आपकी कंप्यूटर साइंस मास्टर्स में एक
डिसर्टेशन इंस्टेड ऑफ डिसर्टेशन रिसर्च प्रोजेक्ट होती है, जैसे आपको कुछ क्रिएट करना हो या और मे बी इन द यूके समटाइम्स दे विल आस्क कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स टू राइट अ डिसर्टेशन एंड सो इट डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ रिसर्च यू स्टिल हैव टू राइट अबाउट योर रिसर्च in whatever field you're working in. And so especially when you're like an engineer who is trying to do research and you don't know how to write because you're not like a lawyer. I'm a lawyer by background, so writing is like बाएं हाथ का खेल for me. But like if you ask someone who doesn't know how to write to start writing, so the experience is different. What you have to focus on your research project के साथ ये skills जो build करते हैं, जैसे research के skills, writing के skills, portfolio of research जो आप use कर सकते हैं to get more jobs, to claim expertise in an area. जैसे आप कोई organization में work करना चाहते हैं, so if you want to work in artificial intelligence, maybe I should use a different example, बहुत हो गया. If you want to work in biosecurity, so you're a medical student but you're bored of medicine in the practical sense, you want to do research, तो अलग तरह की research opportunities हो सकती है. To build expertise in this, your project will give you a lot of help in doing that. It'll give you a lot of like guidance into how to research an area. जैसे मैं personally भी I'm not a scientist, लेकिन मेरी PhD science और society में है. तो मेरा पहली project rotation I'm working on chicken embryos and writing on chicken embryos. So ऐसे skills will help me if I ever want to work in an animal welfare organization, in a science research lab, क्योंकि ऐसे skills मुझको और कहाँ से मिल सकते हैं other than doing research. As a lawyer who suddenly wants to jump into science, research से ही मिल सकते हैं ये opportunities. तो ऐसे skills you can build from your thesis or dissertation that maybe one does not take as seriously as they should, and that opportunity to build those skills is very useful. So aside from just opportunity to build those skills, there's also one more thing, is that opportunity to self-reflect. ये जैसे when you are going to be doing a research thesis yourself, Ritik, you're probably going to, or even with this YouTube channel, you're doing a lot of work and making this content, learning about a whole new world, and even just coming here, it's all an experience that is going to affect what job you want to do after this, how you want to run your business if you do a business. Right. All of this will like affect your decisions. So ये research is another thing that will affect how you decide. जैसे मैं, how did I jump into science and how did I understand or want to do this? मेरी पहली research surrogacy tourism में था. So I was exploring the laws of surrogacy tourism in Thailand. So जैसे वहाँ से मेरी interest grew हुआ, and I did a master's in health law, and then I came here. From where did you do your masters? At the University of Melbourne. तो ऑस्ट्रेलिया में so you also have like traveled to many places. हाँ जी. Thailand. You are from Hong Kong. I'm from Thailand. You're from Thailand. Yeah. So from Thailand to Melbourne. हाँ. Then Melbourne To the UK. हाँ. And what's the next पता नहीं. Maybe milestone? maybe South America. South America. हाँ, तो मैं अमेरिका में भी एक्सचेंज कर बैठा हूँ एक बार तो. हाँ, तो अमेरिका भी कवर कर बैठा हूँ. ठीक है. So almost all continents covered. ठीक है. कुछ बचे हैं वहाँ पे भी अभी तो. Hopefully. ठीक है. हाँ, तो ऐसे रिसर्च सेल्फ एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे जो आपको चांस देती है लर्निंग अबाउट अ सर्टेन टॉपिक. और अगर वो आंसर होता है कि आपको ये टॉपिक पसंद नहीं आती है, दैट्स ओके. दैट्स अ गुड डिसीजन टू नो कि आपको ये पसंद नहीं है. बिकॉज you don't want to spend your whole life into that and think later 10-20 years later नहीं मुझे पसंद नहीं है. तो ये रिसर्च अपॉर्चुनिटी होती है ये टेस्ट करने के लिए. तो ये सब ऐसे थॉट्स ना when you're an undergrad or master students ये हिट नहीं होती. मुझको भी हिट नहीं हुआ. मुझको अब आके हिट हुआ जब मैं ये कोचिंग करता हूँ, जब मैं PhD कर रहा हूँ. थोड़ी लेट हिट हुई है. So I try to like help students in that way. Yeah. Right. तो if you're a PhD student या master student, problems होती है कि if you want to build an academic research career, तो आपको कहाँ से फंडिंग मिले, कहाँ से
राइट सुपरवाइज़र मिले और या कहाँ से रिसर्च शुरू हो करे या कहाँ से ये एकेडमिक नेटवर्क बिल्ड करे, ये सब के लिए हम सपोर्ट देते हैं क्योंकि these प्रॉब्लम्स सब स्टूडेंट्स को फेस करते हैं, सब everyone has this same issues, तो we can help tackle because we've had the experience, we've had talked to over 600 students, we've had all of this going on, तो ये experience के साथ हम help कर सकते हैं. तो in the future we try to make sure that our students are well supported always. Okay. Yeah. So have you covered all the difficulties for master students and PhD? I think so. Okay. Have I? Okay, I think you have. I mean, you can quickly check out Yeah, your good idea. notes. So it's not like we are just randomly sitting today and started discussing the entire topic. We also had like one meeting before. We organized one online meeting and we discussed the entire structure of today's video and हमने डिस्कस करा कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट्स के काम आती हैं, उनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, एंड दैट्स हाउ वी प्लान्ड आज हमें क्या करना है. सो is there anything else that I you don't want think to so. I think we've covered it all. Right. Fortunately. Yeah. So like it's amazing, like even after like talking to Dev for like I don't know maybe 30 to 50 minutes, I'm much more aware about how things work. जो researchers होते हैं, जो PhD students होते हैं, उनको जो अपना करियर पाथ होता है उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना होता है, कैसे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना होता है. तो मेरे को ऑल्दो आई एम नॉट प्लानिंग टू डू PhD at least for now because marketing में PhD पता नहीं, सोचना पड़ेगा. हाँ, जैसे अगर आप अप्लाई करें मार्केटिंग रिसर्च में, तो मे बी योर रिसर्च टॉपिक्स right connecting with marketing might be something unique and neglected, जैसे how to market. अब मैं एग्जांपल नहीं देता हूँ. I've given too many repeated examples. I'm going to say one that maybe you've already heard before. So let's stop with the examples now. So my point is, even after talking to Dev for such a short span of time, I mean, I'm so much aware about things, and once you get in touch with the organization itself, and once you get in touch with the experts, once you start working towards your objectives by taking the assistance and guidance and help from Effective Thesis, you will be empowered with knowledge that is very valuable, right? Yeah. And I think it's gonna make a big impact in the future, and you guys are doing amazing stuff. And just guys, do me a favor. I think वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो काफ़ी लोग अभी तक वीडियो के इस पार्ट से पहले शायद उन्होंने वीडियो बंद कर दी होगी मे बी, बट जो लोग अभी इस पार्ट को देख रहे हैं, जो क्या कहते हैं उन्हें, सर्वाइवर्स. नहीं, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, what's the right word for that, loyal, super loyal supporters, super fans, super loyal supporters जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं. अगर आप इफेक्टिव थीसिस को रीच आउट करते हो, तो जो मैसेज होगा, जो ईमेल एड्रेस में होगा, डू मेंशन दैट कि आपने ड्रीम यूके पे वीडियो देखी थी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को इस चैनल के थ्रू रीच आउट कर रहे हैं, सो दैट अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग रीच आउट कर रहे हैं, देन वी विल मेक फर्दर वीडियोस. एग्जैक्टली. एंड हम आपके लिए और भी कंटेंट लेकर आएंगे, जिससे आपकी प्रोसेस और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एंड चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज वीडियो. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस. इवन मैं तो कहता हूँ अगर पेड भी होती तो भी इतनी काम की है कि जिस चीज़ से आपका पूरा करियर बन सकता है, फ्यूचर बन सकता है, उसके लिए तो ऐसी सर्विस के लिए पैसे देना भी एब्सोल्युटली वर्थ इट है. बट okay, I'm not tall enough, I think. Yeah. But ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको फ्री में सब कुछ मिले तो प्लीज़ do get in touch with them again. And thanks a lot, Dev, for taking out your time. And I'm so glad I met Dev.
we are gonna be in touch for sure. Yeah. मेरे को गुरुद्वारे जाना है एक दिन, so हम साथ में चलेंगे. Do you go there? Yeah, once a month at least, maybe once a week, maybe depending. Next time we can go चलो, there. yeah. लंगर होता है यहाँ के गुरुद्वारों में. तो मैं सिर्फ लंगर के दिन जाता हूँ. मेरे को भी उसी दिन जाना है. तभी पूछा मैंने. अच्छा. बहुत स्वाद है. I went for New Year's Day, 1st of Jan में गया था. हाँ. अच्छा, वैसे मैं ना बहुत बचपन में गया था लंगर में, तो मुझे पता नहीं है कि क्या होता है खाने में. मैं जाता हूँ with people from this building only. हाँ. अच्छा ठीक है, नाम तो वीडियो में नहीं पूछूंगा. बट ओके, आफ्टर द वीडियो I'll ask. बट वैसे लंगर में होता क्या है खाने वाने में? खीर. My favorite. खीर. हाँ, तो some days lucky हो जाते तो जलेबी भी मिलती है. अच्छा. हाँ, तो otherwise typical दाल, आलू मटर पनीर. क्या बात है. रोटी, अचार, छोले. तो लंगर किसी स्पेसिफिक डे पे होता है क्या? तो यहाँ एडिनबर्ग पे गुरुद्वारा इज स्मॉल. ओके. हाँ, तो द बिग गुरुद्वारा इज इन ग्लासगो. Okay. तो वो हर वीक, एवरी वीक दे हैव प्रोग्राम एंड देन दे विल हैव. तो यहाँ पे आई थिंक दे हैव प्रोग्राम एवरी फ्राइडे इवनिंग, बट आई डोंट नो इफ दे हैव लंगर एवरी फ्राइडे इवनिंग. तो लंगर कब होते हैं? Is there any Insta page of Gurudwara or any There's page? a WhatsApp group. There's a WhatsApp? I'm not in the WhatsApp group, You're but there not? is a WhatsApp group. Okay, next time if you go there, let me know. Guys, that's all for today's video. अगर आप यूके में हो तो जाओ यार, गुरुद्वारे जाओ, जलेबियाँ खाओ, खीर खाओ. चाय पियो. चाय भी होती है? अच्छा, वो मैं पीता नहीं तो. अच्छा. ठीक है. But I hope you found this video informative. It was very transparent information. We didn't hide anything from you guys. Even my bad Hindi. Yeah. So that's all for today. Thanks again. Stay safe. Take care. All the best for future. I'll see you soon. Bye. Bye.